Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. I still remember the raw public outrage during the Deepwater Horizon oil spill back in 2010. It really wasn't just about the oil, was it? No, not at all. Or, the sheer scale of the environmental disaster. There was something deeper, a kind of furious, almost guttural reaction that went way beyond simple anger at the mess. Mm-hmm. People weren't just mad about the physical damage. They felt this profound disgust and even contempt for BP as an organization. That's right. And certain statements really threw fuel on the fire. Oh, absolutely. Tony Hayward, BP's CEO then, famously said, "I would like my life back." And that single line, among others, it didn't just add fuel, it ignited a whole new blaze. It really laid bare a deeper truth about how moral emotions, how they truly play out during a crisis. A very visceral example. And what we're exploring today is a fascinating new way of looking at that truth. This discussion, it's actually built on a summary created with the help of a large language model of a really groundbreaking article. Yes, it's titled Mitigating Moral Emotions After Crises, a Reconceptualization of Organizational Responses. And this isn't just some opinion piece. It's a rigorously peer-reviewed paper just published online July 1st, 2025 in the prestigious Journal of Business Ethics. Which is an FT50 listed journal, so it carries significant weight in the field. Exactly. And the minds behind it are brilliant. Paolo Antonetti from EDHEC Business School, Carmen Valor from IIT Universidad Pontificia Camillus, and Branko Božič from Neoma Business School. A very strong team. Now, for anyone listening who's maybe new to academic research, perhaps just starting out on your own research journey, understanding this paper offers some really invaluable lessons, I think. Definitely. It shows how you can unpack these complex topics. And challenge assumptions, build genuinely new knowledge. It also powerfully affirms something we often forget, that wisdom, empathy, and human understanding aren't things you optimize, They're lived. It's a beautiful way to put it. So, whether or not you're a regular listener, I really do urge you, make time to read this thoughtfully crafted article. The link is right there in the show notes. It's well worth the read. You hit on a crucial point earlier with that BP anecdote, though. Crises, by their very nature, they're these sudden public harmful events, often wrapped in immense uncertainty. Right, and they almost always touch on morality, don't they? They do, because external observers of the public, stakeholders, they're always assessing perceived wrongdoing. Now, for a long time, research largely zeroed in on anger as the main negative moral emotion in these situations. Okay. The thinking was basically anger energizes behavior. It makes people want to act. So the traditional view is pretty straightforward. Crisis happens, people get angry, and that anger pushes them to do something, like protest or demand action. Felt almost like a, predictable A leads to B. Exactly, like a simple switch. But this paper reveals a really critical gap in that understanding. Crises don't just stir up anger, they evoke a whole palette of negative moral emotions. A broader range. A much broader range. And here's the real game changer. These emotions don't just drive behavior, they fundamentally shape how evaluators interpret really complex information. How they make sense of it all. Precisely. And that insight radically shifts how organizations should approach crisis response. That's where it gets really fascinating, because for ages, the thought was that emotions like anger or disgust were these, natural kinds. Like they just spontaneously appeared, fully formed, and directly triggered specific actions. Right, like prepackaged responses. Yeah. But this paper introduces a really different way of looking at it, which is so valuable if you're a new researcher learning to question those established ideas. What's truly, I think, revolutionary here is the shift to what's called a constructivist view of emotions. Imagine it like this. Your physical sensations, your heart racing, maybe your fists clenching, they don't automatically become anger or disgust. Okay, so it's not automatic. No. Instead, your brain takes those bodily feelings. It adds your cultural understanding of emotions, what anger means in your society, and then combines that with the specific information available about the situation, like the details of the crisis. Only then does it interpret all of that, and it creates the experience of a discrete emotion, like anger or disgust or contempt. Wow. So feeling an emotion isn't just a reaction, it's an active process, an act of making meaning. Exactly, an act of meaning making. And this is huge because it means organizations aren't just stuck reacting to emotions that are already there.
They can actually influence how these emotions are constructed How? by providing new information, context, or interpretations that shift the public's understanding of the situation. It's about managing the emotional reality of the crisis, not just the bare facts. That makes so much sense. And this understanding sort of sets the stage for diving into the 3 specific moral emotions this paper focuses on: anger, disgust, and contempt. Yes, they call them emotion schemata. Emotion schemata, like mental blueprints. Basically, yes, mental blueprints that guide how we interpret and react when we feel someone else has done wrong. They're all other condemning emotions pointed outwards, like you're pointing a finger at a company saying, you did this, or maybe you were this way. But the key thing, the paper argues, is how differently they direct our attention and our interpretation, right? Precisely. They differ significantly in what they make you pay attention to, how they shape your interpretation of events, and what kind of behavior they get you ready for. Let's break them down. Okay, let's start with anger. What's its main focus? Where does it direct our attention? Anger focuses you squarely on the transgression itself, the specific harmful act. Think about a time you felt really angry. You were probably fixated on what was done wrong. Right. And the interpretation then is all about the harm caused, fairness, justice, who's responsible. It's very much about fixing that specific wrong. That's right. And the behavioral readiness. It's geared towards direct action, seeking redress, punishment, making things right again. It's about tackling that specific issue head on. Okay, makes sense. Now let's move to disgust. This one, it just feels much more, visceral, potent. It absolutely is. Disgust shifts the attention dramatically. It moves from the act to the transgressor, the organization or the individual involved. So it's not about what they did anymore. Yeah, it becomes about who they are. That's a huge shift. So the interpretation becomes really unsettling. It's about their fundamental moral character. Exactly. The transgressor is seen as despicable, tainted, corrupt, maybe inherently flawed, unchangeable even. It's a deep gut-level rejection. And the behaviors that come with disgust. They're about distancing yourself, ostracism, sometimes even a feeling of needing purification, wanting to wash away the contamination. If you think about this in the context of a crisis, disgust is far more damaging than anger. Because how do you fix who someone is perceived to be? Precisely. How do you fix something when the problem is seen as part of their very being, not just a mistake they made? It suggests a deep, maybe unchangeable flaw. That's a much, much tougher challenge for an organization. It's like trying to clean mud off your reputation when people believe the mud is actually baked into your DNA. Wow. Okay. And finally, we have contempt. Now, like disgust, its attention is also on the transgressor, the organization itself. But the interpretation feels different again. Indeed. The interpretation focus for contempt shifts primarily to competence, or rather, the lack of it. Okay. So the transgressor isn't necessarily seen as malicious or morally bankrupt. Not necessarily. They're seen as simply incompetent, utterly incapable, clueless. So with contempt, it's less about them being evil and more about them being, failures. You might think they're just too stupid to get it right, and you just lose all respect. Exactly. And the behavioral response follows that. Derogation, looking down on them, disdain, withdrawal. It implies that, an apology or trying to make reparations might not even land. Because the core issue isn't seen as malice you need to atone for, it's perceived ineptitude. Which is just impossible to respect. This insight feels incredibly practical when you look at how companies handle screw-ups. And building on this foundation, the paper then completely reconfigures how we should think about organizational responses. The current thinking often focuses just on matching the response to how responsible the company seems like. You accept blame if you clearly caused intentional harm. Right, a sort of responsibility scale. Yes, but this paper expands that idea of matching into something far more nuanced and, frankly, more useful. This sounds like where the really actionable advice for crisis managers comes in. What's this new matching concept? It says organizations need to match both the attention focus, are people focused on the transgression or the transgressor? And the interpretation focus is the judgment about harm, moral character, or competence. You have to match your response to the specific emotional schema being activated in the public. So it's definitely not a one-size-fits-all response strategy. You can't just issue a standard apology and hope for the best. Absolutely not. So think about mitigating anger. If anger is the dominant emotion,
The responses need to zero in on the transgression. The specific harm done. Exactly. That means things like minimizing the perceived harm, if possible and credible, accepting responsibility directly for the act, offering concrete reparations like compensation, or committing significant resources to actually fix the damage. Interestingly, even rejecting responsibility can work for anger. Really? If the organization genuinely isn't at fault and can convincingly prove it, shifting the focus away from their actions. Okay. But what about mitigating disgust and contempt? That sounds like a much harder problem since the focus is on the organization itself. It is harder. These emotions demand a shift in the very perception of the transgressor, the organization's core identity or capability. So how do you do that? How do you change how people see you, not just what you did? Well, the paper outlines several powerful strategies. First, you can try to dissociate the organization from the crisis. Break the link. Like what? Firing the CEO? Exactly. Firing leaders, selling off problematic divisions, publicly cutting ties with partners who caused the issue. The goal is to challenge that idea that the organization as a whole has an inherent unfixable flaw. Okay, distance yourself from the perceived source of the rot. What else? Second, you can actively work to associate the organization with positive cues. This is about building a new, more positive narrative. Like PR campaigns. More tangible than just PR. Things like earning new certifications or awards, getting endorsements from really credible independent third parties, hiring renowned experts to visibly bolster your capabilities, or launching significant, verifiable new ethical policies. It's about providing concrete evidence to counter the negative perceptions of character or competence. So showing, not just telling. And you mentioned rejecting responsibility earlier. Can that work for disgust and contempt too? It seems risky. It's definitely risky, but yes, it can work under specific circumstances. If an organization can genuinely and convincingly shift blame to an external actor, another company maybe, or a truly unforeseeable act of God type event, it directly challenges the idea that the organization itself is morally corrupt or fundamentally incompetent. Fascinating. It really underscores that you can't just have one crisis response playbook. Complex emotional problems demand multifaceted solutions. And it also shows, for someone starting in research, how vital it is to define your variables like these distinct emotions really precisely if you want to design interventions that actually work. And that precision is crucial because this brings us to the really serious dangers of mismatched responses. When an organization's actions don't actually address the public's real emotional focus, well, they don't just fail. They actively worsen the crisis. This is where things can go from bad to truly catastrophic for a company's reputation, isn't it? Escalation. Exactly. Escalation. Yeah. If people are already feeling disgust or contempt, judging the company's character or competence, and the company responds as if it's just simple anger about the act, maybe offering compensation when people think they're fundamentally corrupt, that mismatched response just confirms the negative interpretation. It makes them look clueless or like they're trying to buy their way out of a deeper problem. Precisely. It intensifies the disgust or contempt, like pouring gasoline on the fire. And that leads to an increased desire to shun the organization, to punish it more severely, making recovery incredibly difficult. And there's another danger too, right? Transmutation. Yes, and this is absolutely critical. Anger can actually shift or transmute into disgust or contempt. How does that happen? The experience of a mismatched response acts as new information. It updates how people see the situation. Suddenly, their attention might shift from the harmful act itself onto the transgressor, the company. They then interpret that mismatched response, maybe a perceived lack of care, repeated failures, a tone-deaf comment, as clear evidence of bad character or deep incompetence. So the initial anger gets reinterpreted. It gets reinterpreted through this new lens and morphs into the deeper, more damaging emotions of disgust or contempt. Let's go back to our BP example. Initially, people were absolutely furious about the oil spill itself, right? The harm, the oil, the dead birds, the ruined livelihoods. They wanted the leak stopped, the mess cleaned up. Yes, classic anger focused on the transgression and its harmful consequences. Demands for redress. But then BP struggled to cap the well. Their estimates of the spill size seemed way off. The CEO made comments that sounded dismissive, like calling it a natural disaster. It just fueled the initial anger, right? Yeah. Make it worse. It did. But then, crucially, it started to transmute. The public interpreted those ongoing failures and perceived lack of concern not just as unfortunate mistakes, but as evidence of something deeper. Evidence of BP's character or competence? Exactly. The focus shifted from what they did to who they are. And this raises that vital question.
Once that perception of inherent flaw or incompetence solidifies, how incredibly hard is it for an organization to actually recover? So in BP's case, we saw that distinct shift towards disgust, didn't we? People started using language like disgusting corporate greed, corruption, even evilness. That's the character judgment setting in. And Hayward's infamous "I want my life back" comment landed like a bomb. It was perceived as a shocking lack of empathy, reinforcing those negative character inferences. People genuinely felt BP was irresponsible, psychopathic, criminally negligent. I remember seeing signs calling them lying, dirty bastards. The calls to boycott BP intensified with really visceral stuff like, "BP, you make me sick." Textbook disgust response. Moral taint, need for distance. And then alongside that, or perhaps developing from the technical failures, came the contempt. Right, people started calling BP stupid idiots, incompetent a-holes. Because the technical failures just kept mounting. Remember the 100-ton containment dome? It failed. The top kill procedure failed. And there were reports of perceived weak engagement with the recovery, like arguments over dispersants or images of people using paper towels on beaches. All of this reinforced the perception of sheer incompetence. So the anger had clearly shifted, leading to calls not just for fines, but to shut it down forever. Total withdrawal and disdain, classic contempt. And BP did eventually replace its CEO. They made massive long-term financial commitments to the Gulf region. But the study points out that those later responses, coming after disgust and contempt had really taken root, didn't significantly shift those stable negative emotions. Exactly. The reputational damage was profound and lasting. The transmutation had occurred. This whole process really shows how crisis responses that only focus on fixing the initial transgression just aren't enough when the crisis actually calls the organization's fundamental character or competence into question. It's a powerful demonstration of how quickly an organization can become deeply stigmatized, perhaps for years. So pulling this all together, what are the core takeaways for managers? What should they be doing differently based on this research? Well, the big one is that managers have to look far beyond just admitting blame or fixing the immediate problem. They need to proactively understand and then address the specific moral emotions their stakeholders are actually experiencing in real time, if possible. So it's not just about damage control for the act. It's about managing perceptions of the organization's core character and competence. Absolutely. Which means organizations really need to plan for complex, potentially multi-stage responses, not just single actions or statements. A generic apology often won't cut it, especially if disgust or contempt is in the mix. And crucially, the paper suggests organizations should be actively monitoring public sentiment, maybe looking at social media, news comments, public forums. Yes, trying to identify which specific emotions, anger, disgust, or contempt are most prevalent. That kind of real-time data can then directly inform how they tailor their response strategies much more effectively. It's about being deeply tuned in to the public's emotional landscape, not just reacting to headlines. Precisely. So, in essence, this discussion has hopefully shed some light on just how deeply intertwined our emotions are with how we perceive morality and how organizations end up being judged, especially when things go wrong. And for anyone listening who's maybe just starting out on their own research path, I hope this has really shown the value of digging deep into complex issues, of challenging the assumptions we often take for granted, and proposing these kinds of nuanced frameworks. This paper truly is a masterclass in how to build new knowledge carefully. It really is. So maybe a final thought to leave you with. Just consider how quickly a single misstep, maybe a tone-deaf statement or a perceived lack of genuine care, can transform that initial public anger into something far more insidious. Something like that deep-seated disgust or that dismissive contempt that can linger for years, maybe even decades. What does that tell us about the real nature of reputation? Not just for big companies, but for public figures, for institutions, maybe even for ourselves in our own lives. That's a powerful question. The path to understanding these complexities and maybe to cultivating a bit more wisdom and empathy isn't through some simple checklist or optimized process, is it? No, it's lived deeply and thoughtfully. So once again, I really do urge you, delve into the full, meticulously researched article by Paolo Antonetti, Carmen Valor, and Branko Božič. The link is right there in the show notes. And remember, reading deeply affirms that wisdom, empathy, and human understanding aren't optimized. They're lived. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting.
রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। 2010 সাল, মানে ওই যে বিপি ডিপ ওয়াটার হরাইজন তেল ছড়িয়ে পড়ার ঘটনাটা মনে আছে? চারদিকে কি ভয়ঙ্কর ক্ষোভ। হ্যাঁ, শুধু ক্ষোভ না, কিন্তু তীব্র ঘৃণা ছিল, তাচ্ছিল্যও ছিল। ঠিক, কেউ বলছিল বিপির ঘৃণ্য লোভ, কেউ বলছিল অযোগ্য আহাম্মক। এই যে এত রকম অনুভূতি, মানে রাগ ছাড়াও ঘৃণা, তাচ্ছিল্য, এগুলো কেন আসছিল? এগুলোটি কিসের ইঙ্গিত দেয়? এই প্রশ্নগুলোই কিন্তু একটা দারুণ গবেষণার মূল বিষয়। আর আমরা আজ যে আলোচনাটা করছি সেটা আসলে একটা লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল বা LLM দিয়ে তৈরি করা সারাংশ। আচ্ছা, এটা একটা গবেষণা প্রবন্ধের উপর ভিত্তি করে তৈরি, যেটা কিনা জার্নাল অফ বিজনেস এথিক্সে ছাপা হয়েছিল। বুঝতেই পারছেন, খুব নামকরা জার্নাল, FT50 তালিকায় আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই। আর এর লেখকরা হলেন পাওলো আন্তোনেত্তি, তিনি EDHC বিজনেস স্কুলের, কার্মেন ভ্যালোর, IIT ইউনিভার্সিডাদ পন্টিফিসিয়া কোমেল্লাসের, আর ব্রাঙ্কো বোজিচ, নেওমা বিজনেস স্কুলের। বেশ। আর এই গবেষণাটা মানে যখন একটু গভীরে গিয়ে দেখলাম, একটা জিনিস খুব পরিষ্কার লাগলো। এই যে প্রজ্ঞা, সহানুভূতি বা মানুষকে বোঝা, এগুলো তো আসলে অপটিমাইজ করার জিনিস নয়, তাই না? একদম যাপন করতে হয়। সেজন্যই যারা আমাদের সঙ্গে আছেন বা হয়তো আজই প্রথম শুনছেন, সবাইকে বলছি একটু সময় বের করে এই প্রবন্ধটা পড়ুন। খুবই সুচিন্তিত আর মানে কঠোরভাবে পিএ রিভিউ করা একটা কাজ। লিঙ্কটা শো নোটসে দেয়া থাকছে। হ্যাঁ, আর বিশেষ করে যারা ধরুন একাডেমিক রিসার্চে একদম নতুন বা সবে নিজেদের গবেষণা শুরু করবেন ভাবছেন, তাদের জন্য এটা খুব কাজের হতে পারে। হ্যাঁ, আমার তো তাই মনে হয়। কারণ এই গবেষণাটা দেখাচ্ছে যে যখন কোনো সংকট হয়, কোম্পানিগুলো প্রায় কি করে, তারা শুধু মানুষের রাগ কমানোর দিকে নজর দেয়। সেটাই তো স্বাভাবিক মনে হয়। কিন্তু এখানে একটা ফাঁক থেকে যায়। গবেষণাটা বলছে রাগ ছাড়াও ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য, এই ধরনের আরও গভীর, আরও শক্তিশালী নৈতিক আবেগ তৈরি হতে পারে। আর সেগুলোকে সামলাতে গেলে কিন্তু মানে একদম অন্য ধরনের ব্যবস্থা নিতে হয়। আচ্ছা, তার মানে ওই যে আমরা শুনি সংকট ব্যবস্থাপনায় যে ক্ষতিপূরণ দাও, দায়িত্ব নাও, এইগুলোই সব নয়। না, ওইগুলো মূলত রাগ কমানোর জন্য কাজে আসে। কারণ রাগটা ফোকাস করে ঘটনার ক্ষতি আর কে দায়ী সেটার ওপর। বুঝেছি। কিন্তু এই গবেষণাটা তিনটে প্রধান নেতিবাচক নৈতিক আবেগের কথা বলছে: রাগ মানে অ্যাঙ্গার, ঘৃণা মানে ডিসগাস্ট, আর তাচ্ছিল্য বা কন্টেম্পট। রাগ, ঘৃণা, তাচ্ছিল্য। আচ্ছা। হ্যাঁ, রাগটা হলো, যেমন বললাম, ঘটনার দিকে নজর দেয়, কি ক্ষতি হলো, কার দোষ। কিন্তু ঘৃণা সেটা চলে যায় আরও গভীরে। অন্যায়কারীর যে সংস্থা, তার নৈতিক চরিত্র নিয়েই প্রশ্ন তোলে। এরা কি আসলেই খারাপ? এদের নীতিতেই কি গলদ? ও, বেশ সূক্ষ্ম পার্থক্য। আর তাচ্ছিল্য? তাচ্ছিল্যটা দেখে সংস্থার যোগ্যতাকে, মানে এরা কি এতটাই নেকা, এতটাই অযোগ্য যে এই কাজটা ঠিকমতো করতেই পারল না। তার মানে আগে যে ধারণাটা ছিল, মানে সংকটের পরিস্থিতি অনুযায়ী একটা মানানসই প্রতিক্রিয়া দেওয়া, যেমন সংস্থা দায়ী হলে ক্ষমা চাওয়া, ক্ষতিপূরণ দেওয়া। হ্যাঁ, যাকে বলে ম্যাচিং। হ্যাঁ, সেই ম্যাচিংটা শুধু দায়িত্বের সাথে করলেই হবে না, বরং মানুষের মনে ঠিক কোন আবেগটা তৈরি হয়েছে সেটার সাথেও প্রতিক্রিয়াকে মেলাতে হবে। মানে ফোকাসটা কি ঘটনার ওপর নাকি খোদ সংস্থার ওপর? ঠিক এই পয়েন্টটাই এই গবেষণার অন্যতম প্রধান বিষয়। রাগ কমাতে হয়তো ঘটনার ক্ষতিপূরণ বা দায়িত্ব স্বীকার কাজে দেয়, কারণ রাগটা ঘটনা কেন্দ্রিক। কিন্তু যদি মানুষের মনে ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য তৈরি হয়, তখন শুধু ঘটনা বা ক্ষতিপূরণ নিয়ে কথা বললে কাজ হবে না। তাহলে কি করতে হবে? ঘৃণা যেহেতু সংস্থার নৈতিক চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলে, তাই সেটা কমাতে হলে দেখাতে হবে সংস্থাটা নৈতিকভাবে বদলাচ্ছে। ধরুন, লিডারশিপে পরিবর্তন আনা, নতুন করে কঠোর নিয়ম চালু করা, বা হয়তো কোনো বিশ্বাসযোগ্য থার্ড পার্টির মাধ্যমে নিজেদের কাজের স্বচ্ছতা প্রমাণ করা। আচ্ছা, আর তাচ্ছিল্যের ক্ষেত্রে? তাচ্ছিল্য যেহেতু যোগ্যতার প্রশ্ন তোলে, তাই সংস্থার যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। দেখাতে হবে যে তারা অযোগ্য বা আহাম্মক নয়, হয়তো নতুন প্রযুক্তি এনে বা কাজের পদ্ধতিতে উন্নতি করে। আর যদি এই ম্যাচিংটা ঠিকঠাক না হয়, মানে মানুষের মনে আছে ঘৃণা আর সংস্থা শুধু রাগ কমানোর চেষ্টা করছে, যেমনটা বিপির ক্ষেত্রে হয়তো হয়েছিল, হ্যাঁ, তখনই কিন্তু পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। গবেষকরা বলছেন দুটো জিনিস হতে পারে। এক, রাগটা পাল্টে গিয়ে ট্রান্সমিউটেশন, ঘৃণা বা তাচ্ছিল্যে পরিণত হতে পারে।
মানে ভুল প্রতিক্রিয়া দেখে মানুষ ভাবতে পারে এরা শুধু ভুল করেনি, এরা আসলে খারাপ বা অযোগ্য। সর্বনাশ। আর 2, যদি আগে থেকেই হালকা ঘৃণা বা তাচ্ছিল্য থাকে, সেটা আরও তীব্র হয়ে যেতে পারে। এসকেলেশন। বিপির ক্ষেত্রে সম্ভবত এটাই হয়েছিল। তাদের প্রথম দিকের প্রতিক্রিয়াগুলো মানুষের ওই গভীর ঘৃণা বা তাচ্ছিল্যকে ঠিকমতো অ্যাড্রেস করতে পারেনি, ফলে সংস্থার সুনামের আরও ক্ষতি হয়েছিল। তাহলে মূল কথাটা দাঁড়াচ্ছে, সংকটের পরে শুধু রাগ নয়, মানুষের মনে তৈরি হওয়া ঘৃণা বা তাচ্ছিল্যের মতো গভীর আবেগগুলোকেও ঠিকমতো বুঝতে হবে এবং সেই অনুযায়ী প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে হবে। হ্যাঁ, আর এটা শুধু একটা স্ট্র্যাটেজিক ব্যাপার নয়, বরং মানুষের অনুভূতি আর তাদের নৈতিক অবস্থানকে সম্মান জানানোরও একটা দিক। একেবারে, এটা খুব জরুরি একটা শিক্ষা। আর এই বিষয়টা নিয়ে আরেকটু ভাবা যেতে পারে, তাই না? কি রকম? মানে এই যে কর্পোরেট সংকটের কথা বললাম, এর বাইরেও তো আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, সামাজিক পরিসরে যখন ভুল বোঝাবুঝি হয় বা কোনো সংঘাত তৈরি হয়, হ্যাঁ হয়তো, তখনও কি এই একই রকম ভিন্ন ভিন্ন নেতিবাচক আবেগ, রাগ, ঘৃণা, তাচ্ছিল্য তৈরি হয়? আর সেগুলোর প্রতি যদি আমরা সচেতনভাবে আবেগটা বুঝে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারি, তাহলে কি আমাদের আপসি সম্পর্কগুলো আরও ভালো হতে পারে, বোঝাপড়াটা উন্নত হতে পারে? এটা তো ভাবার মতো বিষয়। এই যে আবেগের সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলো, এগুলো বুঝতে পারাটা হয়তো যোগাযোগের নতুন দিক খুলে দিতে পারে। ঠিক। এটা নিয়ে তাহলে ভাবনার অবকাশ রইল শ্রোতাদের জন্য। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। सोचिए, समुद्र में मान लीजिए तेल का एक बहुत बड़ा रिसाव होता है, जैसे वो बीपी होराइजन वाला हादसा हुआ था। तो चारों तरफ गुस्सा तो फैलता है ना, पर क्या सिर्फ गुस्सा ही होता है या उसके नीचे कुछ और भी, कोई गहरी भावना पनप रही होती है? आज हम जिस पर बात कर रहे हैं वो असल में प्रतिष्ठित जर्नल ऑफ बिजनेस एथिक्स में छपे एक लेख का लार्ज लैंग्वेज मॉडल मतलब LLM आधारित सारांश है। ये जर्नल FT50 लिस्ट में भी है। इसके लेखक हैं पाओलो एंटोनेट्टी, वो EDHE बिजनेस स्कूल से हैं, कार्मेन वॉलोर IIT यूनिवर्सिटा पोंटिफिसिया कोमिलास से, और ब्रैंको बोजिच नियोमा बिजनेस स्कूल से। ये लेख अभी हाल ही में 1 जुलाई 2025 को ऑनलाइन आया है। हाँ, और इस लेख को गहराई से पढ़ने पर एक बात साफ होती है कि ज्ञान, सहानुभूति और ये जो मानवीय समझ है, इन्हें आप सिर्फ ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, इन्हें जीना पड़ता है असल में। हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, पर हाँ, हमारी गुजारिश ज़रूर है कि इस काफ़ी गहरी सोच वाले और बहुत बारीकी से रिव्यू किए गए लेख को पढ़ने के लिए आप थोड़ा समय निकालें। लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। तो चलिए इसे ऐसे समझने की कोशिश करते हैं जैसे कोई नया रिसर्चर हो जो अकादमिक शोध की दुनिया में बस कदम रख ही रहा हो। मतलब मूल सवाल ये है कि जब कोई कंपनी किसी संकट में फंसती है तो लोग कैसा महसूस करते हैं, और कंपनी की जो प्रतिक्रिया होती है वो उन भावनाओं पर कैसे असर डालती है। ठीक है, तो खोलते हैं इस विचार को जरा। आमतौर पर पहले जो रिसर्च हुई है उसमें संकट के समय लोगों के गुस्से मतलब एंगर पर ही ज्यादा ध्यान दिया गया है, पर ये लेख कहता है कि नहीं, बात इससे कहीं आगे है। बिल्कुल, ये लेख ना भावनाओं के कंस्ट्रक्टिविस्ट नजरिए से बात करता है, जिसका मतलब है कि भावनाएं सिर्फ बाहरी चीजों पर एक रिएक्शन भर नहीं होती, वो तो हमारे अर्थ बनाने मतलब मीनिंग मेकिंग की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। तो संकट के समय लोग सिर्फ गुस्सा ही नहीं करते, बल्कि घृणा यानी डिस्गस्ट और तिरस्कार मतलब कंटेम्प्ट जैसी नैतिक भावनाएं भी महसूस कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बड़ा दिलचस्प मोड़ है। तो फिर ये गुस्सा, घृणा और तिरस्कार, इनमें मुख्य फर्क क्या है, खासकर जब कोई कंपनी संकट में हो उस संदर्भ में? देखिए, गुस्सा जो है वो मुख्य रूप से जो गलती हुई है या उससे जो नुकसान हुआ है उस पर केंद्रित होता है। लोग चाहते हैं कि भाई नुकसान ठीक हो या जिसने गलती की उसे सजा मिले। लेकिन घृणा और तिरस्कार, इनका निशाना वो गलती करने वाला यानी कि संगठन खुद होता है। जैसे घृणा है, डिस्गस्ट, ये संगठन के नैतिक चरित्र पर सवाल उठाती है। लोगों को लगता है कि ये कंपनी तो अंदर से ही खराब है, भ्रष्ट है, गंदी है, तो नतीजा लोग उससे दूरी बनाना चाहते हैं, उसे एक तरह से समाज से बाहर करना चाहते हैं। और तिरस्कार यानी कंटेम्प्ट, ये संगठन की क्षमता, उसकी कॉम्पिटेंस पर चोट करता है।
लोगों को लगता है कि अरे ये तो नाकाबिल है, मूर्ख है, तो नतीजा लोग मजाक उड़ाते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंपनी संकट के बाद सिर्फ मान लीजिए हर्जाना दे देती है, यानी सिर्फ गुस्से को शांत करने की कोशिश करती है, तो ये शायद उन लोगों के लिए काफी नहीं होगा जो उस कंपनी से घृणा करने लगे हैं या उसे तिरस्कार की नजर से देख रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। लेख का जो मुख्य तर्क है वो यही मैचिंग का है, मतलब सही मेल बिठाना। संकट के बाद जो प्रतिक्रिया दी जाती है उसे न सिर्फ स्थिति की गंभीरता से मेल खाना चाहिए, बल्कि उसे लोगों की भावनाओं के ध्यान के फोकस से भी मैच करना चाहिए कि ध्यान गलती पर है या गलती करने वाले पर, और व्याख्या के फोकस से भी कि लोग उसे नुकसान की तरह देख रहे हैं, नैतिक चरित्र के मसले की तरह या क्षमता की कमी की तरह। मिसाल के तौर पर अगर लोगों में घृणा है तो प्रतिक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो संगठन के नैतिक चरित्र को सुधारने का संकेत दे। जैसे हो सकता है किसी दोषी कर्मचारी को हटा दिया जाए या बाहरी संस्थाओं से कोई पॉजिटिव समर्थन जुटाया जाए। और अगर लोगों में तिरस्कार है तो प्रतिक्रिया संगठन की क्षमता को साबित करने वाली होनी चाहिए। लेकिन क्या असल जिंदगी में कंपनियों के लिए इन भावनाओं में, मतलब गुस्सा, घृणा, तिरस्कार, इनमें फर्क करना और फिर ठीक वैसी ही प्रतिक्रिया देना, क्या ये इतना आसान होता होगा? और अगर प्रतिक्रिया मेल नहीं खाती तब क्या होता है? ये एक बहुत अहम सवाल है। अगर प्रतिक्रिया मेल नहीं खाती तो स्थिति और बिगड़ सकती है। बिल्कुल, अगर लोगों को लगता है कि कंपनी की प्रतिक्रिया सिर्फ दिखावा है या काफी नहीं है, तो उनकी घृणा और तिरस्कार की भावनाएं और तेज हो सकती हैं। इसे रिसर्च की भाषा में एस्केलेशन कहते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो शुरू में सिर्फ गुस्सा था वो भी घृणा या तिरस्कार में बदल जाए। इसे ट्रांसम्यूटेशन कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोगों को लगने लगता है कि संगठन या तो लापरवाह है, मतलब नैतिक समस्या है, या फिर वो नाकाबिल है, यानी क्षमता की समस्या है। और इससे संगठन की साख पर बहुत गहरा और शायद स्थायी दाग लग सकता है। वो संगठन कलंकित, मतलब स्टिग्मेटाइज्ड भी हो सकता है। तो कुल मिला के ये शोध हमें ये सिखाता है कि संकट से निपटना सिर्फ माफ कीजिए कह देने या मुआवजा दे देने भर से कहीं ज्यादा पेचीदा काम है। संगठनों को ये समझने की जरूरत है कि लोग असल में क्या महसूस कर रहे हैं, क्या वो गुस्सा है, घृणा है या तिरस्कार है, और फिर अपनी प्रतिक्रिया को उसी खास भावना के हिसाब से ढालना होगा। हाँ, और जो लोग संगठनात्मक व्यवहार या नैतिकता या संचार जैसे विषयों में शोध शुरू कर रहे हैं, उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भावनाओं की ये बारीकियां कितनी मायने रखती हैं। जैसा हमने शुरू में महसूस किया था, ये दिखाता है कि समझ सिर्फ आंकड़ों या सिद्धांतों में नहीं होती, वो असल मानवीय अनुभवों में जी जाती है। यहाँ एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर संगठन लोगों की भावनाओं की इन बारीकियों को इतनी अच्छी तरह समझने लगें, तो क्या इस बात का खतरा नहीं है कि वो इन रणनीतियों का इस्तेमाल अपनी गलतियों को सच में सुधारने के बजाय सिर्फ लोगों की राय को अपने पक्ष में मोड़ने, मतलब मैनिपुलेट करने के लिए करने लगें? ये जो भावनाओं से मेल बिठाने की कोशिश है, इसमें नैतिक सीमा रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए? इस पर और विचार करने के लिए हमारा सुझाव है कि आप मूल लेख जरूर पढ़ें। लिंक, जैसा हमने कहा, शो नोट्स में उपलब्ध है।